الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Translation: Then did you think that we created you uselessly and that to us you would not be returned? So exalted is Allah, the Sovereign, the Truth, that there is no deity except Him, Lord of the noble throne. Sadaqallahul Azim. As we know, today we have gathered to share our memories and pay tribute to the legend of psychiatry, teacher of the teachers, an institution in himself, Professor Dr. Malik Hussain Mubashir, who departed this world on 10th of August 2020. He was a mentor to many psychiatrists and professionals from other mental health departments. He was a to share his memories. We have with us his son, Dr. Imtiaz Mubashir, Professor Emeritus Syed Haroon Ahmed, Dr. Unaiza Niaz, Chair Section on Women's Mental Health WPA, Professor Iqbal Afridi, President Pakistan Psychiatric Society, Dr. Khalid Saeed, Director WHO Emro Region, Dr. Afzal Javed, President WPA, Dr. Tahir Tayyab, Liaison Psychiatrist from UK, Dr. Nasser Saeed, Ex-President PPS, Dr. Brigadier Modat Hussain Rana, Ex-Dean CPS. Due to time constraints, all the respectable participants are requested to utilize 4 to 5 minutes to share their thoughts and memories with us. First of all, I would like to request Professor Dr. Iqbal Afridi, President PPS, to share his memories and thoughts about Professor Malik Hussain Mubashir Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज हम जिस मौके पे इकट्ठे हुए हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया में उसने साइकेट्री को रोशनास कराया है। और वो खुद अपने अंदर खुद एक इंस्टीट्यूशन तो थे ही, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी कि वो हर लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे पाकिस्तान में साइकेट्री के पायनियर हैं। और कोशिश उनकी ये होती थी कि हर शख्स को जो है जो कैपेबिलिटी को जांचते हुए साइकेट्री में राग़िब करे। खुद उन्होंने इब्तिदा ऐसे की कि यानी मेडिसिन में, जनरल मेडिसिन में MRCP 3 जगह से करने के बाद जो है उन्हें साबित किया कि साइकेट्री जो है बहुत ऊंची एक मकाम रखता है, लिहाजा उन्होंने साइकेट्री को एज ए करियर चुना। और मैं उसकी अपनी मिसाल देता हूं कि मैंने जब MCPS किया तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी MCPS के लेवल के नहीं है, आप FCPS करें। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने वहां पे उनके डिपार्टमेंट में पार्ट 1 की तैयारी की और फिर बाद में मेरे एग्जामिनर भी बने। तो मैं बहुत कुछ है उसकी, अगर हम देखें बहुत सारी खिदमात हैं, लेकिन चूंकि मेरे यहाँ ये बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं और ये हमें एजाज हासिल है कि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी को और जिना हॉस्पिटल के साइकेट्री डिपार्टमेंट को कि हम ये एक उनकी शान में जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा चूंकि हमारे पास काफी सारे लोग हैं और हारून साहब ने पहुंचने वाले हैं। और मैं खासतौर पर शुक्रगुजार हूँ WPA के प्रेसिडेंट अफजल जावेद साहब का और ब्रिगेडियर राना साहब का और जो हमारे उस्ताद हैं और ताहिर तैयब साहब का और डॉक्टर मरियम और बहुत सारे लोग जो इसमें भी ज्वाइन करेंगे। हारून साहब चंद मिनट में पहुंचने वाले हैं कि उन्होंने जो है इस मौके पे जो उनको ट्राइब्यूट पेश करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं बगैर कोई मजीद वक्त ज़ाया किए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर उनैज़ा नियाज, जो कि बहुत बड़ा नाम है साइकेट्री का और वुमेन सेक्शन पे उनकी बड़ी खिदमात हैं, पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे उनकी बड़ी खिदमात हैं, बहुत सारी किताबों की राइटर हैं और बहुत अच्छी स्पीकर हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। Assalamu alaikum, all my friends
colleagues, senior Dr. Harun is about to come. I have no words to say. You know, there's a word in Urdu called ruhansi ho jana. Means you, in immense emotions, your voice, your mind kind of gets foggy and you can't get two words together. The only thing I can say is that he was my very, very, very loving, caring big brother whom I lost. I never had a big brother, and he was my big brother. And literally till the last day, he remained my big brother and a great admirer of whatever I did, like a big brother. So I've lost everything, and I don't think this vacuum can be fulfilled by anybody. God bless him. God bless his lovely, lovely, lovely family. His lovely, beautiful wife, Yasmin, who was part and parcel of his professional life, his children. He was the most amazing psychiatrist, is the most amazing psychiatrist still, because out of 7 children, 5 of his children are psychiatrists. History, I think he's created not only a legend in psychiatry, he created a history that has produced these lovely 5 psychiatrists, and his youngest, Imtiaz Mubashir, whom has seen him as a 5-year, 6-year-old boy, and there he is doing residency in Johns Hopkins, my parent institution also. Hello, Imtiaz. What I wanted to say is that when I came in 1986 as a postgraduate, young woman psychiatrist, again very well trained everywhere, somehow I was respected and applauded for whatever I did in my own city, Karachi. But the way he embraced me like a big brother and how he promoted me throughout, I will never forget. And this is very rare. He was perhaps a few years older, but my God, he was a giant in psychiatry. He was brilliant. He had a brilliant mind and a great administrative and teaching abilities. Right now, almost all head of departments of psychiatry are his students. His people will talk about all the academic qualifications, etc., but I'd like to talk about his humanity, his human feelings. The last time I met him was where I took my memoirs to his place, and he really took me to his little office and a little, you call it, part of his house where he had all his memoirs and things like that. And I found out he was really a Sufi, not only Sufi practically, but actually a Sufi at heart in every way. And I cannot disclose few things because it's very difficult to put into words. He was really a very special man. He is somebody who was the modern father, I would call it a modern father of psychiatry. We have got the founder of psychiatry, Dr. Harun here, but he was the beacon of light for the modern psychiatry, introduced modern psychiatry. He had the most grand first regional meeting of the Royal College of Psychiatrists. And you know, the words commonly used in Pakistan is giants of psychiatry. What it meant was all the best psychiatrists in the world, especially from the Maudsley, Kendall, Goldberg, John Cox, Blue Glass, who was the Royal College president at that time. They all came, and it was like a dream. You know, I couldn't believe it. It was really a dream. Even the American Psychiatric Association president was here. All sorts of people were here. And what a grand academic and social. We had wonderful folk music. So he introduced Pakistan. He introduced the modern teaching methods in psychiatry. They were impressed. And I'm sure that is why Pakistani psychiatrists in England and America are really at the top. I don't have words. I only say, God bless him. I'm sure he will get the highest place in Jannah. And I'm sure his children will be blessed and they'll continue to follow his footsteps. Thank you very much.
جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے محترم استاد الاساتذہ پروفیسر سید ہارون احمد، جو کہ ہم تو ان کو زحمت نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی یہ بڑائی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں میں خود فزیکلی اور پرسنلی آنا چاہتا ہوں ڈپارٹمنٹ میں. حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہم اس پہ لے لیں گے، زوم پہ، تو وہ پہنچ گئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اقبال. ملک مبشر ایک عجیب چیز تھی. He was unique. From the day one that I met him, آپ لوگوں کو تو معلوم ہے 1965 کے بعد جب میں یہاں آیا تو psychiatry was limited to mental hospitals. Psychiatry was limited to mental hospitals, and the conditions in the mental hospital were worse than what they are. In fact, they've got worse now. So there was a mental health was a low priority and high prevalence disorder. People will, with heart, people will die, so it was given preference. It was not known that psychiatry also kills in two ways. One is the suicide was not related to depression at that time, بلکہ بے روزگاری، معاشی مسائل وغیرہ وغیرہ. One. Second was that they are no good to the community. They are living dead, what I call them. And there was no investment in them, will not make any difference to the society, but they will remain burden. But they remain burden on the society. So we thought about, few friends, that about Pakistan Psychiatric Society came into being with the help of 7, 8 physicians, and we tried to. It was at that time, after the first mental health conference, Pakistan Psychiatric Conference in 1974, in collaboration with the family physician, because family physician was not geared or treated at undergraduate. Even now, there is not much. I think you have to make some great effort to include this. So came Mubashir. We had two very dedicated. One was Chaudhry Rashid and Dr. Zaki Hassan, who turned neurologist to psychiatrist. And both of them gave some kind of respectability to psychiatry. So came Mubashir, and I found him in time a great ally, a person who was in time showed that he was committed to mental health, and some people used to call him Malik Hassan Mubashir ko mental health Mubashir. He was so involved in it. It was the Pakistan Psychiatric Society has grew together with him and colleague from Punjab, and now this is the body of psychiatrists who can force certain decisions from the government. About Mubashir, I said soon after he came, and I wrote somewhere also that I discovered immediately that it is very rare that such a highly intelligent, dedicated person joining psychiatry. A lot of people at that time psychiatry used to join because there was no other field. But then I discovered that here is a genius who has joined us, and I'm sure that will take psychiatry to great heights. Initially, we were so close that he and his family used to come and stay with us during the conferences. And I used to go there
and I used to stay with us. And I still remember a very, very tragic incident. We went on a holiday, and he suggested that we must go round and round rather than stay in a place, and he lent his car. And we went round and round and round. And we got lost somewhere, and not lost, but we were there. And came the news of my father's death. I can't say that what he has not done. He has his great connection with the army and other places. Every communication was broadcast all over Galiat, and they discovered me in Ayubabad, Ayub Nagar or Ayubabad, where there was trolley. And we came back, and he had been great help in that moment, and we came back to Karachi. And then I would say that psychiatry has lost a great man who not only raised the status here, but as Vanessa said, internationally, in which I would say that Vanessa has also took our psychiatry internationally. So I'd like to end by saying that for the last 2 days, I've been feeling very sad, never been so depressed and sad after Mubashir has left. Suddenly, I never believed it. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Afzal Javed Saab to share his thoughts. हम पाकिस्तान में और बल्कि दुनिया में हम अफजल जावेद पर फख्र करते हैं कि वो न सिर्फ उसने लोकल बल्कि ग्लोबल साइकेट्री को फरोग दिया, और मैं चाहूँगा कि वो और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो जो है हमने को बुक किया है। तो वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ हम एशियन फेडरेशन के उनके भी प्रेसिडेंट हैं, और मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल अफरीदी, respected Professor Harun Ahmed, Dr. Unaiza Niaz, Brigadier Muaddad, Farid Minhas, and the office bearers of Pakistan Psychiatric Society. Let me first congratulate Pakistan Psychiatric Society for organizing today's meeting. I think this shows our unity. This shows how we really feel for our fellow psychiatrists, and more importantly, how we remember those people who have laid the foundations of modern psychiatry in this country. We are lucky that Professor Harun Ahmed is with us today. He is a history, and he knows what we people are now achieving. It is all because of his and his other colleagues who really started this psychiatry. And of course, as Professor Unaiza Niaz and Harun Sahab has mentioned, Malik Mubashir was an addition and an important contributor to what psychiatry is today. Of course, sudden and unexpected demise of Professor Malik Mubashir came as a great shock to his friends, family, colleagues, and more importantly, members of the psychiatric fraternity all over the country. He was a great advocate of mental health, and throughout his career, he demonstrated remarkable enthusiasm and extraordinary commitment to the profession,
to his patients, carers, and students. I must say, he was among some of the visionary people who had a great insight for the promotion and development of mental health services in Pakistan. And his work at all levels of teaching, training, and more importantly, sitting in Islamabad in policy making will be remembered by all of us. Of course, his academic interests are the hallmark of his passion and commitment to psychiatry. He actively taught, mentored, and supported numerous students and trainees who joined psychiatry, and now they are the pillars of mental health in this country. It won't be an exaggeration to say that most of his students went on to choose to take up a career in psychiatry, as Professor Iqbal Afridi has just mentioned, entirely due to his positive influence. I personally consider this role of promotion of postgraduate psychiatry in Pakistan as the most important part of his achievements. He started and helped College of Physicians and Surgeons for the start of MCPS and FCPS at that time, when people were only thinking of getting training either in UK or in US. And now, with his efforts, we can see many of his trainees are taking up lead positions in various medical institutions in the country as well as abroad with highly prominent achievements. And furthermore, his appointment as the first Vice Chancellor of University of Health Sciences. Well, people may say that that was a great credit for many reasons, but I think he did not forget psychiatry when he took over this position. And many of the current achievements or importance of psychiatry certainly owe to that position and his vision to keep psychiatry as going. Apart from his passion for clinical work and academics, he always participated in the activities of numerous international organizations. Professor Haroon Ahmed and Dr. Onaiza Niaz has mentioned about his links with the Royal College of Psychiatrists. He was in WHO, and he actually played an important role in promoting psychiatry in low-income countries. I was speaking to the college president and some other officers of the college, and college is going to put a personal note about his contributions, especially what he did during those days to promote the college. He has certainly left a great vacuum. While we are remembering his qualities, he was a human being. So there were people who didn't like his vision, but one thing was definite. Nobody disliked him. Nobody ignored his contributions. Nobody said that what he has done in this country for psychiatry, that is questionable. So I, on my personal behalf and on behalf of World Psychiatric Association, would like to express our deepest condolences to Pakistan Psychiatric Society, to psychiatrists in Pakistan, to his wife, children, and family members, along with all his students, who will certainly miss his wisdom and expertise in their future life. This sad loss will be irreparable to the profession.
and he will be deeply missed by all of us. May Allah subhanahu awards him more and his soul rests in peace. Ameen. थैंक यू वेरी मच सर. अगर हम मुबशर साहब के खिदमात को देखें, वो साइकेट्री तक महदूद नहीं थे, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के प्लेटफॉर्म पे तमाम तरह हेल्थ से रिलेटेड शोबों में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा. हम इस मौके पे जो देख रहे हैं कि थर में आज जो है सिंध मेंटल अथॉरिटी का और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ऑफ लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का एक मुआहदा हो रहा है. तो उस मौके पे वहाँ पे वाइस चांसलर साहब बीखाराम साहब थर में हैं और हमारे सिंध मेंटल अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर करीम ख्वाजा बैठे हैं. तो मैं चाहूंगा कि उनके वो ख्यालात भी सुन लें हम. शुक्रिया. डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब. इकबाल साहब मेहरबान. थैंक यू इकबाल साहब. और जो बैठे हुए हैं दोस्त, उन सबको सलाम अलैकुम. इस वक्त हम थर में बैठे हैं. अब आप बात कर लें करीम ख्वाजा साहब. जी प्रोफेसर बीखाराम जो वाइस चांसलर है वो भी 2 मिनट बात करेंगे. प्रोफेसर मलिक मुबशर साहब हरदल अजीज थे पाकिस्तान के. मैं सिंध के वजीर आला की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इस कंडोलेंस में उनकी फैमिली और उनके वेल विशर जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो कंडोलेंस करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से. वो बड़े हर मेरे से भी उनका बहुत अच्छा रहा था. अच्छा हम जब तक वो वहाँ पे साउंड सिस्टम ठीक हो और तो वहाँ के वाइस चांसलर साहब बात करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा. उसके एकेडमिक चिल्ड्रन तो बहुत हैं हमारे जैसे, लेकिन उनका जो बायोलॉजिकल सन जो कि खुद बड़े साइकेट्रिस्ट हैं और जॉन हॉपकिन में चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री के फेलोशिप कर रहे हैं, डॉक्टर इम्तियाज मुबशर, उससे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. शुक्रिया. जी अस्सलाम वालेकुम. बड़ा मुश्किल वक्त है ये हम सब के लिए. I dare not offend you all by offering thanks for mourning his loss or celebrating his life. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो रेवरेंस है कि जो बॉन्ड प्रोफेसर मुबशर का आप सब के साथ, हम सब के साथ था, इट डज नॉट अलाउ मी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं इस गैदरिंग के लिए. लेकिन अब वो नहीं रहे तो वो उनकी अक्सर बातें होती थी, यूनिक बातें होती थी और कभी कभी शॉक एंड ऑ इंस्पायरिंग बातें होती थी. तो मैं as I mourn the passing of my mother's husband and my own and my siblings' guardian and the grandfather of my nephews and nieces, allow me to offer condolences for the passing of your academic, professional and spiritual brother and parent. अबू का हमेशा से बड़ा ईमान था कि उनको जो कुछ भी मिला, जो भी उन्होंने अचीव किया, वो उनके वालिदैन और उनके साथिज़ा के जो रिश्ते थे उनकी वजह से मिला. उनके उस्ताद थे जो सर डेविड स्टैफर्ड क्लार्क, उन्हीं की बातें करते थे, कहते थे वो मेरे उस्ताद कामिल हैं और कि उनको ख्वाब में उनसे गुरती हासिल हुई before he embarked on his crusade for psychiatry in Pakistan. So it is truly wonderful that we are all gathering here to celebrate that bond and relationship of him as a teacher, as an educator. उनकी बड़ी फैसिनेशन थी. वो सर क्लार्क की एक इमेज थी, टॉक में स्लाइड थी पहले कि एक डॉक्टर है, वो बैठा हुआ है कुर्सी में, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसकी आंखों पे पट्टी है. वो कहते थे ये साइकियाट्रिस्ट का काम है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो ब्रेन के सल्का है और जायरा को पैल्पेट करके उसमें से टेंडरनेस नहीं निकाल सकता,
وہ اپنی آنکھوں سے اس کی روح کو ایگزامن کر کے اس کی انفلمیشن کا ٹیومر، روبر، کیلر اور ڈولر نہیں دیکھ سکتا. وہ صرف اپنی زبان سے، اپنے لفظوں سے اس کا ڈائگنوسس اور علاج کرتا ہے. اور اس بڑی کہانیاں آپ لوگ شاید مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. جیسے انہوں نے دین راولپنڈی جنرل ہاسپٹل، ناؤ بینظیر بھٹو ہاسپٹل میں وہ کلینک بنایا. His success in treating dissociative and functional disorders that created myths of his Jesus-like powers, leading patients with cataracts and spinal paralysis. وہ کہتے تھے جی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اندھوں کا علاج کر لیتے ہیں وہاں پہ. His expert forensic advice and testimony on seminal cases, leading to his national recognition. Collaborative tendrils with primary care, spiritual healers, village elders, and local authorities. وہ ملٹی کلرڈ ویژول کارڈز بناتے تھے ٹو انکریز ڈائگنوسس اینڈ اویئرنیس آف نیوروسائکیاٹرک ڈسآرڈرز. آئی واز اے چائلڈ، میں ان سے ایک کارڈ گیم بنائی ہوئی تھی ان رنگین کارڈز کے ساتھ. His subtle but also important mission of replacing mental health as the brand name for psychiatry. His tense and paternalistic relationship of managing the interface of pharmaceutical influence on the practice of psychiatry. بڑی کہانیاں ہیں، بہت کچھ ہے. آئی تھنک ان دی اینڈ میں صرف ان کو وہی باتیں ان کی کچھ دوبارہ یاد کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے ان سے سیکھی، دیٹ آئی کیری ود می ٹو ورک ایوری ڈے. وہ کہتے تھے فار پروفیشنل ایٹائر، ریمبر اٹس ناٹ جسٹ دا ڈاکٹر ایگزامننگ دا پیشنٹ از آلسو ایگزامننگ دا ڈاکٹر. وہ ماسٹر کلینیشین تھے. مریض آتے ہیں تو وہ بڑے سیریمنی کے ساتھ ان کی فائل would toss it across his desk so that each patient would, at the first consultation, he would speak to him himself with a clear and unbiased fresh pair of eyes. With great authority, with tamam family members, caregivers or accompanying attendants who kehte the, please leave the room, at once diagnostic and therapeutic for a myriad of clinical presentations. His beautifully crafted and culturally appropriate informational care for biopsychosocial formulation of affective and anxiety disorders. His confidential and sensitive exploration of taboo ego-dystonic thoughts and urges in the context of OCD, his delicate balance of validation and gentle challenging to expand insight in the context of functional and dissociative disorders. His almost magical ability, like a reflex hammer, of eliciting brewing mania and hypomania with his bright affect and Allahu, and patients would say Allahu, and he would diagnose mania. His mastery of internal medicine and ever vigilant clinical airs, looking for signs of thyroid dysfunction, early Parkinsonism, irritable bowel disease, temporal lobe epilepsy, vertebral spondylosis, and other medical conditions presenting with psychiatric symptoms. Professor Mubashir has left us all with vast treasures of his knowledge, experience, and insights. My prayer is that each of us continue to feel his presence at the bedside, in clinics, in conferences, in corridors of power, with his gentle, reassuring hands and stern, guiding eyes to continue his crusade for the promulgation of psychiatry and mental health in Pakistan and across the world. And lastly, I humbly beseech for all of us to invest our lives in consoling and offering support to the grief of those most sorely affected by his loss. Our patients suffering with mental and psychological illnesses, their families and loved ones. Jazakallah. بہت شکریہ آپ کا. اب میں جس شخص کو دعوت دے رہا ہوں وہ سب کو پتا ہے، اور وہ حقیقت میں اگر کہا جائے تو وہ پروفیسر مبشر ملک کے موجودہ ولی عہد ہیں، اور وہ پروفیسر بریگیڈیئر رانا صاحب جو ہے، میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ہارون صاحب، my elder sister, Dr. Aneza Niaz Sahiba, Professor Afridi صاحب، میرے وہ تمام دوست جو اس وقت آن لائن
available हैं from around the world. Office bearers, Pakistan Psychiatric Society, President, World Psychiatric Association, Dr. Afzal Javed साहब, मेरी अपनी ही फैमिली के बेटे और बेटियां I'm not truly in the best shape actually to say much, लेकिन I'll try. बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में कि that I'm lost for words, but today, yes, I am. मेरी ज़िंदगी के दो ऐसी ECGs हैं जो मैं कभी भी भूल नहीं सकूंगा. ये दो ECGs 20 साल के दरमियान हुई हैं. 20 साल पहले एक बेड साइड पर बैठे हुए मैंने अपने उस्ताद मोहतरम जनरल इशरत हुसैन की ECG को एसिस्टली में तब्दील होते हुए देखा और फिर वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई. और 20 साल बाद एक बार फिर मेरे रूहानी वालिद, मेरे टीचर, शायद मेरा सब कुछ, उसी तरह से एक बेड साइड पर मैंने फिर एक ECG को फ्लैट होते हुए देखा. लेकिन दोनों दफा मुझे ऐसा लगा जैसे ये ECG फ्लैट होने के बाद किसी इन्फिनाइट सफर पर निकल गई है. मुझे लगा कि ये ECG फ्लैट होकर सिराते मुस्तकीम बन गई है और ये सिराते मुस्तकीम का सफर शायद हमेशा चलता रहेगा. बहुत साल पहले मुझे लिटरेचर पढ़ने का शौक था और यही वजह भी थी कि मेरी पहली मुलाकात प्रोफेसर साहब से हुई वो इसी हवाले से हुई थी. तो उसमें मुझे एक नॉवल ने बहुत मूव किया था. उसका नाम था डोरियन ग्रे, ऑस्कर वाइल्ड का नॉवल था. उसका एक जुमला मुझे भूलता नहीं था और उसने मुझे बड़ा डरा के रखा हुआ था. उस जुमले को डॉक्टर साहब ने मेरी जिंदगी में मुकम्मल करके दिखाया और गलत करके दिखाया कि a philosopher and a wizard like Oscar Wilde could be wrong. उस नॉवल में ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि knowledge can be fatal. It is the uncertainty that knowledge produces as a charm, but it then leaves you with a mist that makes those things look beautiful and wonderful that are ugly. This is the game that knowledge plays. It turns a reality into an illusion and then into a disillusion. मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे ये करके दिखाया जिंदगी में मेरी आंखों के सामने that no, knowledge is not fatal. Knowledge can be immortalized. But how it is immortalized? I think this is the greatest message that he gave to all of us, that knowledge can be immortalized if it is turned into a service that is for those who may never seek any service. You and I, ladies and gentlemen, the servants of psychiatry, truly can
give a tribute to Professor Mubashir by ensuring that we continue to prove Oscar Wilde wrong, by translating knowledge into persistent action and service. Dr. Mubashir continues to watch me every day in my clinic and will continue to watch me in my clinic. There is no way that I can enter my clinic without wearing a necktie, because he would not be here, but would be here. Each time that I will deconvert a patient of conversion disorder, he would smile. And I would tell my patient, who would say, डॉक्टर साहब ये तो कभी ठीक ही नहीं हुई थी, ये अभी कैसे ठीक हो गई है, मैं आपको दुआ देता हूं. तो I would tell that family कि ये नाम है जिसको आपने दुआ देनी है, मुझे नहीं देनी, इस नाम को आपने दुआ देनी है. ये हुनर उन्होंने सिखाया था और अभी यहाँ मेरे साथ वो मौजूद थे जब मैं ये आपके साथ मरीज के साथ काम कर रहा था. So his presence all around us on account of his knowledge and skills translating into service is what you and I need to do, ladies and gentlemen. Let me warn all my friends and colleagues sitting here that one word that he hated was NATO. NATO का उनका वो तर्जमा नहीं था जो दुनिया को पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, वो कहते थे NATO है नो एक्शन, टॉक ओनली. तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि साइकाइट्री के लोगों को बातें करने का बहुत शौक है, काम नहीं करते कोई. तो let us prove to the world that Pakistani psychiatrists, Pakistan Psychiatric Society truly and fully is committed to never become NATO or a member of NATO. Let us show to the world that we mean business. We mean translating the knowledge and the legacy of knowledge that Professor Bashir has left amongst all his students, which are not in hundreds, they are in thousands around the world. There is not a single continent in the world, ladies and gentlemen, where his students are not there. And all of them need to come together and prove that we are not members of NATO. We mean action. We mean service. And when we will do that, I think that will be the real tribute. और मैं आपसे ये भी अर्ज करूं on a very personal note, that the impact that he has left on Pakistani psychiatry is not just on account of starting the community service. हमारी जिंदगियों में हमने translate होते देखा है psychiatry को into the term called mental health. मैंने अपनी जिंदगी में दो बड़े challenges थे पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी के. एक ये था कि हमने एक्ट पागला 1912 खत्म करना है. That got done by none other than the efforts of Professor Malik Hussain Mubashir. दूसरा क्या इशू था कि बिहेवियरल साइंसेस की टीचिंग स्टार्ट करनी है पाकिस्तान में किसी तरह से. पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी का बहुत बड़ा एजेंडा था. It happened because Professor Mubashir became the Vice Chancellor of University of Health Sciences and introduced behavioral sciences as a compulsory subject in MBBS. We have not been able to put psychiatry as a compulsory subject. He created a subject of behavioral sciences in Pakistan and he implemented it. Ladies and gentlemen, उन्होंने जिंदगी में जो कुछ किया वो यादगार है. जो कुछ आप करेंगे उनकी याद में वो भी यादगार होगा. May I conclude by saying and sharing with you my pain on screen. ये एक नेकटाई है लेडीज एंड जेंटलमैन जो उन्होंने मुझे दी थी और इसके लिए कोई प्राइज नहीं था. अगर मैं इसको दिखाने से पहले आपसे ये कहता कि जो नेकटाई उन्होंने मुझे दी होगी उसका रंग क्या होगा, जो लोग उन्हें जानते हैं वो इमीडिएटली कहते हैं कि उसका यही रंग होगा. लेकिन आज के बाद ना मैं ये नॉट कभी खोल सकूंगा
نہ میں یہ نیک ٹائی کبھی پہن سکوں گا، کیونکہ یہ گرہا جب تک بندھی ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ گرہا، اس گرہا کے اندر میں ان کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک گرہا باندھ لیں ان کی یاد کی آج اپنے دلوں، اپنی روحوں اور اپنے ذہنوں میں، اور اس گرہا کو کبھی کھولیے گا نا، اس کو بندھا رہنے دیجیے گا، تاکہ یہ یاد دلاتی رہے آپ کو the promise of turning knowledge into service. Thank you very much. سر بہت شکریہ آپ کا. مجھے یاد ہے کہ 2006 یا 2007 میں جب کالج آف فزیشین سرجن کے موقع پہ جب آپ ڈین تھے اور میں سیکریٹری تھا، ساری 40-50 فیکلٹی ایک طرف تھی اور ہم دونوں ایک طرف تھے، اور اس میں پروفیسر مبشر ملک جو ہمارے پاس ساتھ تھا، اور ہم نے کس طریقے سے پارٹ 1 میں بیہیویئرل سائنس سے ڈلوائی. سر آپ کو یاد ہوگا، آپ کا بہت شکریہ اور یہ بڑی خدمات ہیں آپ کی. میں اس موقع پہ اب ہمارے محترم وائس چانسلر لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر بیکا رام صاحب جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی فی الحال تھر میں ایک سوسائڈ پریونشن پہ سندھ مینٹل اتھارٹی کے ساتھ ایک MOU سائن ہو رہا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر ڈاکٹر بیکا رام، وائس چانسلر لمس. سب سے پہلے تو اقبال آفریدی صاحب آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس کنڈولنس میٹنگ میں مجھے موقع دیا بولنے کا. ملک مبشر صاحب سے میری کافی ملاقاتیں رہی، اور وہ ملاقاتیں میری اکثر بیشتر ہم PMDC میں جاتے تھے، جب بیٹھے ہوتے تھے تب ملاقاتیں ہوتی تھی، اور میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ سر ہر میڈیکل ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلا جو سینٹینس ہوتا ہے ٹریٹمنٹ مینجمنٹ میں، وہ ہوتا ہے ری ایشورنس. اور وہ ری ایشورنس جو ہم جنرل فزیشین اور جنرل سرجن جو دیتے ہیں، وہ ری ایشورنس ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ری ایشورنس ہم کس طریقے سے دے رہے ہیں، ایتھیکلی دے رہے ہیں، نان ایتھیکل دے رہے ہیں، اور اس میں کیا ہمیں بولنا چاہیے، کیا کس طریقے سے پیشنٹ کو ری ایشور کرنا چاہیے. تو وہ بڑے مسکرائے اور مجھے انہوں نے ایک مجھے بلا کاغذ اٹھائیں. میں نے کاغذ اٹھایا، انہوں نے مجھے میرے سے پوائنٹس لکھوائیں، اور انہوں نے بولا کہ بھئی ری ایشورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کو سچ سچ بتائیں، لیکن بریکنگ نیوز کو، جو اچھی خبر ہے وہ پہلے بتائیں، اور بری خبریں ہیں جو لاسٹ میں بتائیں، اور ان کو ہوپ ضرور دیں کہ یہ آپ کی چیزیں ہیں. اور ملک مبشر صاحب سے میں ویسے سائیکیٹری کا پروفیسر تو نہیں ہوں، جنرل میڈیسن کا پروفیسر ہوں، اور اقبال آفریدی صاحب اور ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب والوں سے، اور باقی جو سائیکیٹرسٹ جنہوں نے بات کی ہے ان سے مختلف ایونٹس پہ، لمس میں، سر CJ میں، ڈفرینٹ ایگزامس میں میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اور ملک مبشر صاحب ایک ورلڈ ریناؤنڈ سائیکیٹرسٹ تھے، اور مجھے یہ چیز سن کے بار بار خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو پرانے ہیں، جو نیو ہیں، وہ ورلڈ وائڈ ویل نون ہے. تو ملک مبشر صاحب کے لیے اگر ہم میں کتنا بھی بولیں وہ تھوڑا ہے. سب دوستوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کی ایک ایک چیز کو مینشن کیا ہے، اور ان کے تھیم کو آپ نے، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بولا کہ آپ ایک ناٹ لگا دیں ٹائی میں، اس کو کھولیں نا، تاکہ یہ رشتہ جڑا رہے. اور اسی چیز کو آگے لگتے ہوئے آج ہم تھر میں آئے ہیں، اور تھر میں ہم پوری ٹیلی میڈیسن کے تھرو پورے تھر پار کر کے ڈفرینٹ ایریا کو کیسے ہم کور کریں گے، وہ MOU بھی ہم نے سائن کیا ہے. اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر ایک بہت بڑی چیلنج ہے، اور ہم ملک مبشر صاحب کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور میں ابھی کریم صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہاں ہم ایک کسی پروگرام کا نام ہی ملک مبشر صاحب کے نام سے دے دیں، تاکہ ہمیں یہ یاد دلاتا رہے کہ ہم ان کے اس پہ چلنے، کیونکہ وہ جو پرانے لوگ تھے ان کی پوری لائف کا ایکسپیرینس جو تھا وہ ہماری عمروں سے بہت زیادہ تھا. ہمارا بہت بڑا لاس ہوا ہے، اور یہ لاس ہم اس لاس کو ہم ریکور تو نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سب کلیکٹیولی مل جائیں تو پھر شاید ملک مبشر صاحب کی جو تھاٹس تھی، جو ان کی خدمات تھی، جو ان کو اس سوسائٹی کے لیے
اور وہ ہم شاید اس کا کچھ حصہ ہم اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور یہاں ہارون صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, اور میں ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں, ہم سب لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے. ان کے اقبال آفریدی صاحب, ان سب کی محنت سے سندھ مینٹل اتھارٹی بنی, اور سر سی جے کو بھی ایک ہم آٹونامی مل گئی ہے. سر سی جے جیسے بیہیویئر سائنسز کی ہم بات کر رہے تھے تو اس کا نام بھی ہم نے چینج کر دیا ہے, سر سی جے سائیکیٹری اینڈ بیہیویئر سائنسز کا انسٹیٹیوٹ کا نام دے دیا ہے اس کو. اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے ڈگری ایوارڈنگ ہوگا. اور بیہیویئر سائنسز کے پورشن کو میں ابھی کریم صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ آگے ہمیں جو بھی ہم بیہیویئر سائنسز پڑھائیں وہ ملک مبشر صاحب کے نام ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں, تاکہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں ان کی باتیں ہم نہیں بھولیں گے, یاد رہیں گی, اور ہم اس طریقے سے ان کے ایک فلسفی کو آگے لے کے چلتے رہیں گے. وہ ایک پوری کمپلیٹ یونیورسٹی تھے, وہ ایک پروفیسر نہیں تھے, وہ ایک کمپلیٹ یونیورسٹی تھے, اور ان کو سارے سبجیکٹس پہ اتنا کمانڈ تھا کہ انہوں نے یو ایچ ایس کو دیکھیں آپ نے, انہوں نے کتنا آگے لے گئے وہ. اور انشاءاللہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. اور ظاہر ہے جو چیز دنیا میں آنی آئی ہے اس کو ایک دن جانا ہے, لیکن خدا سب کو اس لیول تک موقع دے کہ وہ اس سوسائٹی کی, اس کمیونٹی کی, اسے پیشنٹس کی خدمت کر سکے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, اور گاڈ بلیس دیئر فیملی آف ملک مبشر صاحب. تھینک یو سر, تھینک یو آفریدی صاحب, تھینک یو. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اب ہمارے سامنے جو ہے فرید مناز صاحب, جن کی بڑے خدمات ہیں سائیکیٹری میں, اور انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری کو پروفیسر مبشر ملک صاحب نے جو پودا لگایا تھا, اس پودے کو پروان چڑھانے میں پروفیسر فرید مناز کا بڑا ہاتھ ہے. اور وہ ہمارے جو کالج فزیشین سرجن کے ایکس ڈین بھی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ اقبال آفریدی, ہارون صاحب, ڈاکٹر رونائزہ, افضل جاوید, مودد رانا. آج ہم جس شخص کو یاد کر رہے ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا, اور میں اس انسٹیٹیوشن کے اندر جب شامل ہوا میری عمر 22 سال تھی, اور 22 سال سے لے کے 63 سال تک میری زندگی پہ جو امپیکٹ پروفیشنلی مبشر صاحب کا ہے وہ شاید کسی اور استاد کا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری زندگی میں اور اساتذہ نہیں آئے, بہت سارے آئے, پاکستان میں بھی آئے, باہر بھی آئے, لیکن جو پوزیشن, جو حیثیت میری زندگی میں مبشر صاحب کی ہے وہ شاید کسی اور استاد کی نہیں ہو سکتی. اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ انہونی کو ہونی کر دیتے تھے, وہ جو سوچتے تھے وہ کر دیتے تھے, وہ ڈرتے نہیں تھے, اور وہ ہر چٹان کے ساتھ چنگاریاں اٹھاتے تھے اور اپنا کام پورا کرتے تھے. اس 42 سال کے عرصے میں میں ان کا شاگرد بھی رہا, میں ان کے ساتھ ہاؤس جاب بھی کرتا رہا, میں ان کا پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ بھی رہا, میں ان کا میڈیکل آفیسر بھی رہا, میں ان کا اسسٹنٹ ایسوسیٹ اور پروفیسر بھی رہا. میں نے ان کو انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری کو اسٹیبلش کرتے ہوئے دیکھا, اور کئی ایسی داستانیں ہیں جو ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہوں گی جو میں نے ان کے ساتھ مل کے سر انجام دیں. اور وہ ایک ایسی چیز تھی جو ایک مشنری, ایک ویژنری, اور ایک آدمی جس نے ایک امنگ لے کے چلنا ہے کہ میرا کام اور میرے مریض اور میری دنیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ مبشر صاحب کا خلاصہ تھا. انہوں نے جس طریقے سے انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری بنایا, جو ان کی ویژن تھی, جس طریقے سے انہوں نے ٹریننگ کی, اور مجھے یاد ہے کہ ان کے سامنے لانگ کیس پریزنٹ کرتے ہوئے میرے ناخن نیلے ہو جاتے تھے, مجھے لگتا تھا جیسے مجھے سائنوسس ہو گیا, اور میں 2 فکروں سے زیادہ ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ میری اتنی چیزوں کو درست کرتے تھے اور اپنے انداز میں مجھے ڈسمینٹل کرتے تھے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب اس ڈسمینٹلنگ سے میں مینٹل
स्टेट में आया और स्टेबलाइज्ड स्टेट में आया, तो मुझे दुनिया की किसी ताकत ने कभी कोई रोकने की कोशिश नहीं की। ये सब उनकी मेहरबानी और उनकी गाइडेंस थी जो मुझे रोकती थी पहले, और उसके बाद उसने मुझे बेलगाम कर दिया। और मेरा ख्याल है कि वो अक्सर इस चीज़ का इजहार करते थे कि वो मैंने जो उसके बाद या उनकी ज़िंदगी में उनके सामने जो चीज़ की उसके वो बहुत तसल्ली में होते थे। साथियों ने बहुत बातें की हैं उनकी कारकर्दगी के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने उनको अंडर ग्रेजुएट्स के साथ भी बात करते देखा, मैंने उनको पॉलिटिशियंस के साथ भी बात करते देखा, मैंने उनको डॉक्टर्स के साथ भी बात करते देखा है, मैंने उनको ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी बात करते देखा है, और मैंने उनको सदर साहिबान के साथ भी बात करते देखा है। और एक चीज़ उनमें जो कंसिस्टेंट होती थी वो उनकी कन्विक्शन होती थी दैट ही वांटेड टू डू समथिंग, एंड इफ ही वांटेड टू डू समथिंग नोबडी इन द वर्ल्ड कुड एवर स्टॉप हिम। और जब उन्होंने WHO के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने नॉर्मन सार्टोरियस और जो बड़े बड़े शख्सियात थी WHO की, उनको इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में बुला के इस तरीके से उन्होंने इस काम को डेवलप किया, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें वो हर हफ्ते सुबह घर से निकलते थे, मदरसों में जाते थे, स्कूलों में जाते थे, मौलवी साहिबान के साथ बात करते थे, और फिर उन सारों को गैदर करके इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में लेके आते थे। मैं समझता हूँ मेरी ऑन जॉब ट्रेनिंग जो उन्होंने की, मैं दुनिया का बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मैंने इतना अरसा मुबशर साहब के साथ गुजारा। और आप अगर ये समझ रहे हैं कि मुबशर साहब सिर्फ अस्पताल में ही होते थे, उसके अलावा उनको कोई किसी चीज़ की खबर नहीं होती थी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। उन्होंने जिस लगन, जिस मेहनत और जिस प्लानिंग के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश की, वो एक पेरेंटिंग की नई मिसाल है। इतना मसरूफ शख्स, उसको ये पता होता था कि सबू सुल्तान मुबशर ने अपने माई बेस्ट टीचर के एसे में लिखा क्या है, और शाम को जाके उसकी इस्लाह करते थे। सबू बड़ा होके कैडेट कॉलेज हसनाबाद में चला गया। एवरी फ्राइडे ही वुड ड्राइव to Islamabad and check what Sabu had done. And this was not only with Sabu, with mashallah all his children that he did that. And that is the reason that he kept that balance between his professional life and his personal life, that mashallah he has produced a lovely family of boys and girls who are absolutely excelling in their tasks. और इन बच्चों को आप दुनिया के किसी बच्चे के साथ कंपेयर करें, ये किसी से कम नहीं है, बल्कि 10 कदम आगे हैं। अल्लाह इनकी सेहतें, इनकी ज़िंदगियां बुलंद करे, और इनके लिए अपने वालिद के इस मिशन को लेके आगे चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ये समझता हूँ कि मुबशर साहब जैसा शख्स एक फिनोमेना है, एक इंस्टीट्यूशन है जो शायद हमारी ज़िंदगियों में दोबारा नहीं आएगा। और हम में से जो उनके साथ जितने मुंसलिक रहे हैं, हमारी अपनी खुशकिस्मती है। और हम सारे जब उनके बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि मुबशर साहब हमारे साथ ही थे, किसी और के साथ नहीं थे। और हम सारे अपना ये क्लेम कर सकते हैं कि मुबशर साहब मुझे ज़्यादा पसंद करते थे, किसी और को नहीं पसंद करते थे। लेकिन मैंने अपनी जवानी से अपने बुढ़ापे तक उनको जिन रोल्स में से गुजरते देखा, मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे, उनके प्रोडक्टिव ईयर्स थे, उनकी अचीवमेंट के ईयर्स थे, मेरी लर्निंग के ईयर्स थे। और जब मैं ये देखता हूँ मुड़ के कि मेरी ज़िंदगी में जो सुकून है, जो सलामती है और जो सक्सेस है, उसका आर्किटेक्ट सिर्फ मलिक हुसैन मुबशर है। ये ज़रूर बात है कि मैंने जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में उनकी कुर्सी संभाली तो मैं उस कुर्सी पे 1 साल तक बैठ नहीं सकता था। उनका ट्रेनी था, उनके साथ सारी काम किए,
لیکن جس دن انہوں نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا میں 1 سال تک اس دفتر کے اندر جا کے ان کی کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو. اور انہوں نے جو امانت مجھے دی تھی انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری, میں نے 15 سال اس میں کوئی نئی چیز نہیں کی. اس شخص نے جو اس کا ویژن بنایا تھا, جو اس کا مشن بنایا تھا, میں نے صرف اور صرف اس کو پورا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی پڑی. مجھے جو طور طریقے ملک حسین مبشر نے سکھائے تھے میں نے ان کو اپنے انداز میں ڈیلیور کیا, اور مجھے بھی بہت تسکین تھی اس چیز کی, اور وہ بھی بہت خوش تھے ان ساری چیزوں کے ساتھ. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ میاں ان کی وائف اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے. اور میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب اپنے والد کے نقش قدم پہ چلیں, اور زندگی کو گزارنے کے طریقے بھی وہ آپ کو بتا گئے ہیں, اور آپ کو سکسیشن پلان بھی وہ دے گئے ہیں. ان کی پلاننگ اتنی امیکولیٹ تھی کہ ان کو پتہ ہے کہ سبو نے کیا کرنا ہے, ان کو پتہ ہے امتیاز نے کیا کرنا ہے, ان کو پتہ ہے سائمہ نے, مریم نے اور باقی بچوں نے کیا کرنا ہے. اور اگر یہ بچے پچھلے 6 مہینے کی چیزیں ریوائنڈ کریں تو وہ ان کے لیے اگلے ان کی باقی زندگی کے لیے سب دستور ان کو سمجھا گئے. یہ ان کی ویژن تھی جو وہ لانگ ٹرم سوچتے تھے اور اپنی زندگی کو اس طرح سے چلاتے تھے. اور ہم لوگ جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں ان کے شاگرد ہیں, ان سے فیض یاب ہوئے ہیں, ہم ان کے بلند درجات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہم وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہوں اور ان کا نام آگے چلتا رہے. میں اس دعا کے ساتھ اقبال آفریدی آپ کا اور باقی ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے استاد کے بارے میں کچھ الفاظ بیان کر سکوں, جن کو بیان کرنے کے لیے شاید صدیاں لگ جائیں. میں اسے جسٹس نہیں کر سکتا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. جب ہم پارٹ 1 کی تیاریاں کر رہے تھے مبشر صاحب کے ڈپارٹمنٹ میں, تو طاہر طیب صاحب جو ہے اور ہم روزانہ جو ہے سوال بناتے تھے اور سر کی ٹیبل پہ رکھتے تھے پروفیسر مبشر صاحب کے. تو میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ طیب طاہر نے بہت شارٹ نوٹس پہ جو ہے نا ہماری آواز کو لبیک کہا, اور میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اس موقع پہ کریں. بہت شکریہ. پروفیسر طاہر طیب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ پروفیسر آف لائزان سائیکیٹری ہیں کارڈیف یونیورسٹی میں, اور وہاں پہ وقتاً فوقتاً پاکستان میں جو لائزان سائیکیٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں, اور ان کے بڑے خدمات ہیں خاص طور پر ڈیلیریم اور دوسری آرگینک سائیکیٹری کے حساب سے. شکریہ. اقبال بھائی شکریہ. السلام علیکم. ان للہ و انا الیہ راجعون. بڑا مشکل وقت ہے سب پہ, اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کی رحلت کی جب خبر ملی تو میں مریض دیکھ رہا تھا, اور پہلا خیال مجھے فرید بھائی کا اور مودد بھائی کا آیا. I'm not going to talk about his professional achievements, لیکن میری اپنی لائف پہ ان کا امپیکٹ. پہلے دن ہاؤس جاب کی سلیکشن کے لیے میں گیا تو انٹرویو پینل تھا RMC کے پرنسپل کے آفس میں. میں انٹر ہوا, مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے پرنسپل صاحب نے, جمیل صاحب نے. میں نے کہا جی میں نے سائیکائٹری کرنی ہے. پروفیسر مبشر کھڑے ہو گئے اپنی نشست پہ اور کہنے لگے تم کل سے شروع کر دو کام. اتنا وارم ویلکم کسی پروفیسر نے نہیں دیا ہوگا. پھر میں پارٹ 1 کا امتحان دینے گیا. یہ 3 اینیکڈوٹس میں بتاؤں گا آپ کو صرف اس لیے جسٹ ٹو شو دی امپیکٹ it has had on me, and I'm sure it has had on many other people. FCPS پارٹ 1 کا امتحان دینے گیا. مودد بھائی کے پاس نیوی میں تھے تب, حاضری دی, امتحان کی تیاری کی. فرید صاحب نے لبیک کر کے تھپکی دے کے امتحان کے لیے بھیجا. پروفیسر صاحب وہاں پہ ایگزامنر بھی تھے.
میں فیل ہو گیا. میں نے کہا میں نے تو سائکائٹری کرنی ہے. واپس آیا راولپنڈی تو پروفیسر گھر آ گئے. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کون پروفیسر ہے جو کسی اسٹوڈنٹ کے گھر جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے کرنی ہے سائکائٹری؟ میں یو کے آ گیا, مجھ سے ناراض رہے کہ تم نے وفاداری نہیں کی, تم ملک چھوڑ کے چلے گئے. میری آخری ملاقات ان سے پچھلے سال تھی, اور میں خوش قسمت ہوں کہ فرید بھائی اور مدد بھائی دونوں وہاں پہ موجود تھے. میں نے اپنی ٹاک دی, اسٹیج سے اترا, پروفیسر صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے, مجھے گلے لگایا, میری چیک پہ انہوں نے کس کیا اور کہا My son, I'm proud of you. اور یہ وہ شخص ہے جس سے میں نے بڑے سالوں بات نہیں کی تھی. ناٹ بیکاز کوئی اور وجہ تھی, اس لیے کہ میں آ گیا, یو کے میں سیٹل ہوا, کام کرنا شروع کیا, لیکن ہر مریض کو دیکھا, اس وقت یہ سوچ آتی تھی ڈیلی, پروفیسر صاحب کی یہ بات یاد آتی تھی, جس دن you lose your passion to see the patient, you've lost touch with profession. اگر یہ امپیکٹ میرے پہ ہے تو ان کے جتنے شاگرد ہیں ان کے اوپر بھی یہ امپیکٹ ہوا ہوگا. ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے 2 استاد اور بہت سارے دوست ان سے کنیکٹ کیا, اسپیشلی پروفیسر فرید منہاس اور پروفیسر مدد رانا. اس کے علاوہ بہت سارے دوستوں سے کنیکٹ کروایا اور ایک پیشن دیا. ان سے وہ چیزیں سیکھیں جو پروفیسر صاحب نے انہیں سکھائی تھیں, اور آہستہ آہستہ ہم پہ ٹرکل ہوتی رہی. مجھے ٹل دس مارننگ آئی واز ناٹ تھنکنگ کہ میں نے کیا کہنا ہے, میں تو صرف اپنا غم آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بیٹھے بیٹھے ان کی آئی ایم گوئنگ ٹو فنش آن دس, ان کا ایک آئی ایم شیور کہ پروفیسر فرید اور پروفیسر مدد کو یاد ہوگا, وہ یہ ہمیشہ گاہے بگاہے کہا کرتے تھے, کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے, مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے, کیوں کہیں مجھ کو یاد کرے, بس روح سمانا میرے لیے, کیوں وقت اپنا برباد کرے, اس شخص نے ہمارے لیے اپنا وقت برباد کیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر طیب طاہر. میں اب اگر ہمارے اس پہ موجود ہے سبو, ان کا جو بڑا بیٹا ہے, ورنہ ڈاکٹر مریم ہے ان کی بیٹی, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے خیال مبشر لکھ دیں. ہاں یہ مریم سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی السلام علیکم, میں ان کی بیٹی سائمہ ہوں. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ٹیک دا فون اوور ٹو مائی بردر سبو. اچھا انمیوٹ کر دیں. اچھا Can you hear me? Yes, sir. You can talk. Assalamu alaikum. This is Dr. Sabu Sultan Mubashir.
This is a little unexpected for me. My younger brother did such an amazing job of representing the Mubashir clan, and I really appreciate that. मेरी जो 3-4 thoughts हैं इस sad occasion पे, सबसे पहली thought तो ये है कि हम 7 बहन भाई हैं और अब्बू हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, माँ वाला प्यार करते थे. But I can say this to you without any reservation कि जितना प्यार वो psychiatry से करते थे वो अपने 7 बच्चों से भी नहीं करते थे. And for me, I think listening to these tributes that are being paid to him today has confirmed that notion that I had for all these years. For him, psychiatry was his first love, and it gives me immense pride to see that the community that he worked with and served is paying him such rich tributes. I have been a professional psychiatrist myself now for about 20 years. And the highlight of my professional life in the last 20 years has been talking psychiatry with him, discussing psychiatry with him. I used to speak with him every weekend for 3 hours. और उसमें से 1.5 घंटा हमारी बात जो है वो शेर व शायरी, अदब और रूहानियत पे होती थी, और 1.5 घंटा anafranil, flupentexol की combination versus Prozac and risperidone की combination पे होती थी. He was one of the wisest and the most intelligent man that I've ever known. And I think most people who dealt with him, came across and worked with him, would tend to agree with that. Thank you so much for allowing me to participate in this conversation and listening to the rich tributes being paid to my father. Thank you. डॉक्टर मुख्तार साहब, आप अगर हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बात कर लें. मुख्तार नहीं है, अच्छा. Assalamu alaikum, sir. Assalam. Was really honored to participate over here. और हमारे जो psychiatry के stalwarts हैं, उनकी बातें सुनकर और उनकी राय सुनकर काफ़ी जो है it's very source of inspiration. प्रोफेसर मुबशिर साहब जो है I mean मैं सिर्फ एक शेयर कहूँगा और I don't have the words क्योंकि I mean he's the work which he has done for the mental health, और मैं समझता हूँ कि he was a physician, then turned into the mental health specialist, psychiatrist, and then turns towards spirituality. वो कहते हैं कि जी वो पिछड़ा कुछ इस अदा से एक किस रुति बदल गई और एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. जी चूंकि वक्त हमने 1:30 बजे तक रखा हुआ था, लेकिन अभी भी कोई अगर बात करना चाहे इमरान साहब पे या फिर रजा और रहमान साहब, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हजरत अली साहब जो कि सऊदी अरब से हमें कनेक्ट किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें, फिर हम एक दुआ कराते हैं. आप अपने आप को अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही है. जी अब आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम सर. On behalf of Professor Dr. Ghulam Rasool, Balochistan Institute of Psychiatry and whole fellow of Balochistan, really is a great tribute for Professor Mubashir Malik. सर के साथ मेरी से 2 इंटरेक्शन रही है. एक जब मेरी ट्रेनिंग थी सन में सुबह से लेके असर तक पढ़ा है, तो दैट डे आई रियलाइज कि सर के जो एनर्जी है तो वो एनर्जी किसी में हो नहीं सकती, क्योंकि एट दैट टाइम. और सेकेंड टाइम सर मैं व्हेन आई वाज appearing in the part 2 exam, he was after 20 years he became examiner,
और तो मैं सर के साथ मेरे टेबल वाइव आ गया था, मेरे हाथ पाँव फूल गए कि मेरे क्या होगा। फिर प्रोफेसर फरीद मिनाज साहब जो मेरे सुपरवाइजर है, सर ने कहा कुछ नहीं होगा, बस आप जस्ट रिलैक्स रहें। तो सर यकीन जाने सर के साथ जो इंटरेक्शन रही है 2 बार, मैं फॉरएवर याद रखूँगा। और मैं हमेशा जब नमाज में दुआ करता हूँ वालिदैन के बाद, हमेशा मैं अपने टीचर्स के लिए दुआ करता हूँ। सो ही वाज माय मेंटर, माय टीचर, एंड वी लॉस्ट अ ग्रेट एसेट ऑफ आवर सोसाइटी। मेरे उनके बच्चों के साथ डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर ज़ैनब और डॉक्टर मरियम के साथ कंडोलेंस है कि वाकई वी लॉस्ट सच ग्रेट पर्सनैलिटी, हमेशा हमारी दुआ में याद रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। अगर किसी और ने बात करनी है तो वेव कर दें, वरना फिर हम दुआ की तरफ जाते हैं। किसी ने बात करनी हो तो वेव कर दें अपने डिजिटली। ठीक है, तो अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर माजिद अली आबदी जो कि पर्सनल इन पर्सन आए हैं हमारे डिपार्टमेंट, कि वो एक दुआ भी करा दें, न सिर्फ इनकी मगफरत के लिए और दर्जात बुलंद करने के लिए, बल्कि ये कोविड के सिलसिले में भी हमारे मुल्क को और ग्लोबल को जो है प्रोटेक्शन की खातिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक मुबशर साहब की फैमिली से ज़ाती तौर पे ताज़ियत, और तमाम शागिर्दान से भी, जो बिकॉज के मेरा ख्याल है हम सब जो मुबशर साहब से कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे फैज़याब होते रहे हैं, हम सब भी उन सोगवारान में शामिल हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फातिहा पहले कर लें, फिर हम सब दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मलिक मुबशर साहब को जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए। या मेरे मौला मलिक साहब और इनसे पहले जाने वाले तमाम असातिज़ा कराम को अपने जवार रहमत में जगह दे, इन सब की मग़फ़िरत फरमा और इनके दर्जात बुलंद फरमा। हम सब को उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। जो कुछ उन्होंने हमें सिखाया है अपने मरीज़ों तक पहुँचाने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। ये जो सदका जारिया हमारे असातिज़ा कराम का है, ये सदका जारिया हम अपनी ट्रू स्पिरिट के अंदर पहुँचा सकें। मलिक मुबशर साहब की जो तालीमात कम्युनिटी के लिए, जो खिदमात कम्युनिटी के लिए हैं, हम सब पे अब ये फ़र्ज़ है कि मेरे मौला कि हम इसको इस कम्युनिटी खिदमात को उसी तरह से सर अंजाम देने की कोशिश करें। मेरे मौला हमें ये हिम्मत और जुर्रत अता फरमा कि हम मलिक साहब के सही शागिर्द साबित हों। या मेरे मौला इस मुल्क को, पाकिस्तान को और इस दुनिया को कोरोना की वबा से जान छुड़ा दे। मेरे मौला हम सबको इस वबा से जान छुड़ा दे। मेरे मौला हमारे बहुत से साथी इस कोरोना के अंदर चले गए। डॉक्टर सिब्तैन की शहादत हुई है, और बहुत सारे अभी डॉक्टर असद साहब कोरोना से अभी बीमार हैं। या मेरे मौला उनको भी मुकम्मल शिफा अता फरमा दे। तमाम बीमारों को, हर तरह की बीमारी से मेरे अल्लाह शिफा अता फरमा दे। मेरे मौला हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इन सब के जितने लायकीन इससे पहले दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के लिए मग़फ़िरत फरमा दे। रिसेंटली इकबाल आफरीदी साहब के बड़े भाई का इंतकाल हुआ, या मेरे मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, उनको भी अपने जवार रहमत में जगह दे। अल्लाह ताला हम सब को सब्र अता फरमाए। इस दुआ के साथ कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा वक्त आए और बेहतरीन वक्त आए, और आने वाला वक्त इन तमाम वबाओं बलाओं से हमें निकाले। पाकिस्तान की माशी माशरती सूरत हाल को पाकिस्तान अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बेहतरीन अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये बताता चलूं कि प्रोफेसर असद तमीजुद्दीन जो मौजूदा वहाँ के हेड हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने कल मुझे कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि वो आए, लेकिन हम सब उसके लिए दुआ गो हैं, टच में हैं। और मैं यहाँ पे बताता चलूं कि मैं प्रोफेसर हारून अहमद साहब के, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ के प्रेसिडेंट हैं, हालांकि हम उनको जहमत नहीं देना चाह रहे थे। सुबह से मैं ट्राई कर रहा था कि वो अब ऑनलाइन लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ हम वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट
प्रोफेसर अफजल जावेद साहब का और सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बस हम चाहते हैं कि इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको और प्रोफेसर मुबशर साहब के खानदान को सब्र जमील और उसके साथ हम सबको नेक राह दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शुक्रिया आप सबका।